Hello dear children, welcome back to my channel. So in my earlier videos I have told you about the algebraic expressions, the types of algebraic expressions, then the like and the unlike terms. Okay, in my today's video I am going to discuss about how to form an algebraic expressions using variables, constants and arithmetic ऑपरेशंस. ठीक है, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फॉर्म करना है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस की. अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, दिस आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस. तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव subtract z from y. Okay, the statement is subtract z from y. तो यहाँ पे z और y दो वेरिएबल्स है और हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि द क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट इज subtract z from y. तो how we are going to form the algebraic expression? See here, हमको z को y से subtract करना है, तो our algebraic expression will be y minus z. Got it? Now I'm going to take another example. The example goes like this: 1/2 of the sum of numbers x and y. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमको 1/2 of the sum of numbers x and y. तो यहाँ पे नंबर्स हमको क्या लेना है? x एंड y के टर्म्स में. ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है और हमको कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना है? सम. सम मतलब x एंड y को सम अप करना, ऐड करना. ओके, और क्या दिया हुआ है और एक्स्ट्रा? 1/2. 1/2 मतलब 1/2. So how we are going to form the algebraic expression? We are going to form the algebraic expression like this. 1/2 means 1/2. Of मतलब यहाँ पे of का मतलब क्या होता है? Multiplication. So here it will be multiply 1/2 of the sum of numbers x and y. What are the numbers here? X and y. And what we are going to do? We are going to add it. So the algebraic expression will be half, 1/2 into x plus y, and we have to keep this in bracket, or you can write like this also, 1/2. Even if you're not using this multiplication sign here, you can write like this: 1/2 of the sum of numbers x and y. I'm taking few more examples so that it will be more clear. Okay, how to form an algebraic expressions. बहुत सारे बच्चे इसमें ही फेस करते हैं प्रॉब्लम कि algebraic expressions कैसे बनाएं. ठीक है, so I'm taking few more examples so it will be more clear to you. So I'm taking like numbers x and y both squared and added. ये थोड़ा अलग तरीके का स्टेटमेंट है. क्या दिया गया है कि नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर, तो हमको
क्या लेना है, कौन से दो नंबर्स लेना है यहाँ पे, x एंड y लेना है। बोथ स्क्वेयर्ड का क्या मतलब होता है, जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर होता है। तो x इंटू एक्स करते हैं तो इट बिकम्स x का स्क्वायर। ओके, मैंने अर्लियर वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था। इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देन यू वेरी मच यू नो कि ये स्क्वायर, ये 2 जो है वो कहाँ से आया। ओके, उसी प्रकार से अगर मैंने बोला 2 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर, नॉट 3 इंटू 2, ओके, 3 इंटू 3 इज योर 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट इज गिवन कि नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो हम लोगों को एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे, हमने अब जब x को का स्क्वायर किया और बोथ एडेड, यहाँ पे हमको एक और ऑपरेशन यूज करना है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, प्लस बोथ, हमको ये दोनों नंबर को स्क्वायर करना है, तो y इंटू y। इन अदर way we will write x into x means x का square plus y into y, your y square. Okay, so the numbers x and y both squared and added, so the algebraic, which gives an algebraic expression as x square plus y square. Okay, now one more example I am going to take. Number, children, one more example I have taken here to explain you. So the statement reads, number 5 added to 3 times the product of numbers m and n. So here the two numbers that we are going to take is m and n. Okay, now which operation we have to use, the product. Product मतलब multiplication. So what we are going to do, first we are going to multiply m into n, keep it in the bracket. Okay, then number 5 added to 3 times the product, और इस प्रोडक्ट का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है when we are talking or we are saying 3 times or 2 times, it means it is multiplied that much time. Like 3 times, it means 3 is multiplied to m into n. Okay, and then how much is added here, 5 is added. So because added is given, it means we have to use this addition sign here, plus 5, or in other way you will write, I told you, if you don't want to mention this multiplication sign, you don't have to write like this, you can write like this as well, m into n, or you can write m n also, it means the same, but to be more clear I will write this so that it will be okay for you. Okay, so 3 m into n plus 5. So children, I hope the explanation here is okay with you. You are getting my point, because this is a very important concept. Because if you don't know how to make the algebraic expressions from the given statement, then you will not be able to proceed further. Okay, so it's better you need to know, or you should know how to make an algebraic expression from the statement given. So kids, kindly, if you want to go through this chapter further, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.